Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we started discrete Fourier transform and said that among all the transforms we have learned so far, the DFT is the most important one, and the reason for that was that we are dealing with numbers. In a block of DFT, we are throwing in numbers in the form of a sequence, finite length sequence, and we are taking the numbers out, which are x of k, and these numbers are required in most of the digital signal processing applications. So that's why we use DFT in our uh, most DSP applications. And then we said that DFT has close relationship with the discrete time Fourier transform and discrete Fourier series. And in that context, we started looking at continuous time Fourier series, which is defined for continuous time periodic sequences. And it was said that any periodic sequence can be constructed by summing up or adding infinitely many scaled exponentials, or any periodic sequence can be broken into infinitely many exponential, such that when you add these weighted exponentials, you get the periodic signal back. And we discussed the examples pictorially as well. And then we move to discrete Fourier series, which is defined for periodic discrete time sequences. And a tilde sign was introduced for showing a discrete time periodic sequence. So x tilde of n is a periodic sequence which is defined as x tilde of n plus kn for all the values of k. ये जो उल्टा a नजर आ रहा है, that is for all the values of k, उसकी notation है. And discrete Fourier series representation says that again a signal can be reconstructed by adding up n different exponentials. जो आपके सामने continuous time Fourier series में the claim was that we have to add infinitely many exponentials, but here what we are doing, that we are adding up n exponentials here, and only n different frequencies. ये जो exponentials हैं ये different frequencies के exponentials हैं. And then we introduced a notation w n is equal to exponential minus j 2 pi over n, and that is being used to simplify the expressions जो कि हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं या फिर आगे अगले chapters में आने वाले हैं. So that's an example of the periodic sequence. So 0 1 2 3 indices पे आपके पास 2 3 4 5 जो है samples मौजूद है, and then ये 2 3 4 5 sample values जो हैं ये repeat कर रही हैं और ये repeat करती चली जा रही हैं. So for n is equal to 4, this is a periodic sequence, and this is a periodic sequence. ये जो आपको नजर आ रहा है, this is a periodic sequence with n is equal to 6, and the claim is that this periodic sequence can be decomposed into 6 many complex exponentials. The complex thing has a real part, it has an imaginary part, and then if we add these complex exponentials, we will be getting the original signal back. So how all these things are working? Just an explanation that x tilde of n is equal to 1 over n is equal to 0 to n minus 1 x tilde of k, wn minus kn. For n is equal to 4, we have expanded this. So for n is equal to 0, that is equal to 1 over 4, k is equal to 0 to 3 x tilde of k, w40, because n is equal to 0. And similarly, we have done this for x tilde of 1, x tilde of 2, and we approached this representation, that we can represent these the samples of x tilde of n in this vector notation, and these ones are shown here because w40s are actually there, but w40 is equal to exponential minus j0, and that's equal to 1. That's the discrete Fourier series. Now these are the expressions which we are using. X tilde of k, this is called the analysis equation. N is equal to 0 to n minus 1 x tilde of n. That's the discrete time sequence which is put in this equation to obtain the discrete Fourier series coefficients. And this is called the synthesis equation, that if we have got different discrete Fourier series coefficients, we can use those coefficients or the scaling factors with different n exponentials,
and as a result of that summation, we will be getting our x tilde of and the periodic discrete term sequence back. Then we did this example that we have a periodic impulse with period n, and we are interested in finding the discrete Fourier series coefficients. So we will be using this analysis equation, and x tilde of k is equal to n is equal to 0 to n minus 1. So this is one period. X tilde of n exponential minus j2 pi nk over n, and x tilde of n is 1 in this zone, n is equal to 0 to n minus 1, so that's equal to delta of n, and that's wn nk. This expression can be written in this form. So finally x tilde of k will be equal to 1 into wn0. For n, for k is n is equal to 0, it is 1, and for n is equal to 0, wnk will be equal to wn0, and then for n is equal to 1, that would be wnk, but that time delta of n will be equal to 0, and similarly we will go for the whole period, and as a result of that you will be getting x tilde of k is equal to 1 for all the values of k. So that's the situation here कि आपको x tilde of k मिल रहा है for all the values of k जो है आप these are the discrete Fourier series coefficients. And then if we are interested in constructing the signal bag, because this is a B part, construct the periodic signal from DFS coefficients taking n is equal to 4. So we will be using n is equal to 4, and now we are using the synthesis equation. X tilde of n is equal to 1 over 4, k is equal to 0 to 3, w4 minus kn. Okay, x tilde of k is equal to 1 because we have already used that. This is 1. So we will be using this, that is 1 over 4, k is equal to 0 to 3, w4 0, and that's equal to 1 over 4. And for all these values of k from 0 to 3, it is w4 0 because n is equal to 0. So that's why it is 1 over 4 into 4, that is equal to 1, which is this value. This is x tilde of 0. And then for x tilde of 1, x tilde of 2, x tilde of 3, and you will be getting all the zeros. Then we talked about discrete Fourier series properties. The only two properties which are important are the shift property and the periodic convolution. And the shift property is different than the linear shift. And the reason was that in the linear shift, if you have to shift something by plus 2 or minus 2 or plus k or minus k, in that case you are dragging the signals towards left or right. But in periodic sequence, you cannot do it because in fact, the effect you are doing it, but the effect is of the periodic convolution, because when you drag the signal, because the zone of interest of the window of interest is the basic period, any period. So we are taking this period 0, 1, 2, 3. When we shift right or the shift left, in that case 4 and 3, the samples adjacent to this window, they will be dragged in, and the samples in this window 4, 3, that will be dragged out. So as a result of that, that is analogous to a periodic thing placed on the circle. So we did this example that the actual how the periodic shift or the circular shift is working, and as a result of that, the convolution operation is changed as well, because for periodic signals we will not be using the simple shifting, because the shifting operation, the flipping operation is inherent in convolution. But when the signals are periodic, the flipping of the signals and the shifting of the signals is not traditional, which we were using in our basic signals. So as a result of that, we are using the flipping and periodic shifting as well. And for that we did one example that we have a periodic signal, but there was one condition that in order to have the convolution of two periodic sequences, both of the signals should be period with the same period. That is shown here, that this is a periodic sequence, but it is periodic with period n. This is periodic sequence, it is periodic with period n, and now they qualify to be convolved periodically.
because both are periodic, and the result will be periodic as well, which is shown here. It is periodic with period n is equal to 4. And then we did this example, and we will be doing it today again. So that was our periodic convolution. Now I ask any questions because I have repeated it, what we did yesterday, just a summary of that. But if you have any question, you can ask. Sharoz? जी सर. जी बेटा, any questions? नहीं सर. मेहरताबा? सर ये जो टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, अगर टाइम पीरियड सेम नहीं होगा तो तब भी हम लीनियर में तो इस तरह की कन्वोल्यूशन करते थे. तो अगर टाइम तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे because by definition we need that both of the sequences should be periodic to perform periodic convolution. That's the baseline. ठीक है, period. ये काम नहीं हो सकता जब तक दोनों periodic ना हो. Got it? Yes sir. Okay, इसी चीज को आगे लेके जाएंगे because the main aim is हमने दो sequences की जो कि finite length sequences हैं. Actually we are moving towards DFT. बट रास्ते में एक चीज आई DFS, और हम उस DFS को देखते हुए DFT की तरफ जा रहे हैं. ठीक है बेटा, इस बात को ज़हन में रखना है बिकॉज वी सेड इनिशियली दैट DFT इज एसोसिएटेड विद DFS एंड DTFT. In that course we had to go through the path of continuous time Fourier series and then discrete Fourier series, and discrete Fourier series says कि यहाँ पे because of the periodic nature of the sequence the normal convolution is not possible. That convolution, by virtue of the properties which periodic sequence have, that is periodic convolution, and there are some inherent properties or requirements with this periodic convolution. Now we will be moving towards DFT, and then probably sometimes we will have to employ the properties of DFS as well. So you will be seeing it. Mehrtaba, have I answered your question, beta? Yes, sir. Okay. Oh, as we said before that DFT is related to DFS and DTFT. Now we know about what is DFS, but what's the relation of DFS with DFT? Let's see it. Now we know something about DFT, that x of n is passed through this DFT block through this analysis equation is there. It is, sorry, it's not the analysis equation as far as this DFS is concerned, but x of n is moving into this block, and what we are getting x of k, the n points going in and the n points coming out. So we have talked about this. So DFT is connected to DFS and DTFT, and now we are going to see this connection, that how it is connected to DFS. So if we have a finite length sequence x of n which has got n points, of course it's not periodic. So first we will have to make it periodic to bring in the concept of DFS. So we will be periodicizing this x of n, and it's not difficult to periodicize something. So if you have x of n जो है वो 1 2 3 है on the indices 0 1 2 पे, तो in that case अगर मुझे इसे periodic बनाना है तो what I will be doing, I will be repeating these 1 2 3 1 2 3 1 2 3. As a result of that now this signal x tilde of n is periodic with period n is equal to 3. अब ये periodic sequence बन गया जिसको हम x tilde of n कहते हैं. ओके, अब x tilde of n है तो अब हम इसका DFS जो है वो ले सकते हैं. x tilde of k हमें मिल सकता है by analysis equation. So this is my x tilde of k, by I can use the equation. अब मेरे पास discrete Fourier series coefficients आ जाएंगे which are x tilde of k. Now you take just one period of that would be your x of k, and that is called DFT. And this notation shown here is in fact R and K, means it is a window of length n. Suppose n is equal to 3 है तो ये 3 window length है. This is R3 of k. That is being multiplied with this thing. So as a result of that was a periodic sequence. When this is multiplied, I mean the
with this thing because that would be with period 3 as well. इसका भी period 3 होगा x tilde of k का. This x tilde of k will be multiplied with this r3k, and as a result of that you will be getting just one period of that, which is x of k, and that is your DFT. So the relation of DFS with DFT is that you have taken any finite length sequence x of n, you have periodicized that, which is x tilde of n. You have taken the DFS coefficients, which are x tilde of k, and then you have extracted one period of that using x tilde of k, r n k, and from there you have obtained x of k, which is in fact the DFT of this x of n. Questions, please. Sir, Rn of k क्या है हमारे पास इधर? It's a window. N is the period. Rnk. This is Rnk. This is R3k. It's a window function. You are extracting one period of that. कि कोई भी सीक्वेंस अगर आपके पास है, suppose x tilde of k is periodic with period 3, तो जब आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आपको बाकी तमाम चीजें जीरो हो जाएंगी because it is something like that. बाकी तमाम सैंपल जीरो हो जाएंगे, सिर्फ एक बेसिक पीरियड जो है वो आपको मिल जाएगा बिकॉज n was equal to 3. अगर R4k करेंगे तो आपको अगला जीरो जो है, अगर पीरियोडिक है वो सीक्वेंस, तो फिर आपको चौथा भी और पांचवा भी इस तरह मिलते चले जाएंगे. Have I answered? Yes, sir. Okay. Now, suppose this is the situation. Suppose this is my x of n, and the period of this is n is equal to 4, and now I'm interested in finding out x of k. Of course, that would be of period 4 as well, because we have talked about this कि 4 पॉइंट्स अंदर जा रहे हैं इस DFT ब्लॉक के तो 4 ही पॉइंट्स बाहर आएंगे, n पॉइंट्स जा रहे हैं तो n पॉइंट्स बाहर आएंगे. सो x of n एक सीक्वेंस है, फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस है जिसकी लेंथ जो है वो 4 है, and I am interested in getting the DFT of that. तो मुझे DFT में भी 4 ही पॉइंट्स मिलेंगे. मुझे DFS के थ्रू अगर DFT फाइंड आउट करना है, which is a theoretical kind of thing, but the relationship is shown through this, that I will be taking x tilde of n, and what is x tilde of n? I am just getting the periodicizing this. So I will be repeating this. 1, 2, 3, 4 है suppose ये, तो मैं repeat करता जा रहा हूँ, and that's my periodic sequence. Suppose करते हैं x tilde of k जो है वो ये है, ठीक है, ये मेरे पास सैंपल्स हैं x tilde of k के, ये मेरे suppose करता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, -1, -2, -3, -4. This is, for example, ये shape आ रही है मेरे discrete Fourier series coefficients की. So as a result of that, when I will be getting this x tilde of k, which is a periodic thing, which we know that discrete Fourier series coefficients are periodic as well. So as a result of that, what we will be doing x tilde of k multiplied with r n k. N in this case is 4. So r4k, which is equivalent to multiplying this sequence with this window function, which is 1 for 0, 1, 2, 3 and 0 for all rest of the sample. So as a result of that क्या होगा, आपको ये sequence जो है ये मिल जाएगा, which is 0, 1, 2, 3. ये आपको x of k मिल जाएगा, which is actually the discrete Fourier transform of this x of n. Got it? सर इसमें जो x डेल्टा ऑफ k होता है ये गिवन होगा सर हमें? x डेल्टा ऑफ k मुझे समझ नहीं आ रही, क्या x डेल्टा कहाँ पे है? सर डेल्टा x डेल्टा ऑफ k जो है सर ये गिवन होगा क्वेश्चन? जी जी बेटा, it's tilde. यस सर, ये गिवन होगा सर या नहीं? नहीं बेटा, ये गिवन ऑफ कोर्स क्यों गिवन होगा, मकसद अभी तो हम कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आप देख लीजिएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल दिस टाइम इट वाज गिवन, ठीक है, जस्ट टू elaborate this concept that was my periodic sequence, and this time it was suppose given. That's why I have written for example, because that's not the exact situation in x tilde of k domain. So I was just giving the examples कि हो सकता है कि इस तरह की शक्ल के हों,
but the key concept here is that it is periodic. ठीक है? और x delta of k अगर periodic है तो then that would be multiplied with this r and k window, and as a result of that you will be getting just one period of that, and that is your x of k. आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझिए, आप क्या गिवन होगा क्या नहीं होगा उसको छोड़िए अभी. यस सर समझ आ गया. ठीक है. Okay, ji. So this is now by definition what is our discrete Fourier transform, that we know that x exponential j omega jo hai, we have been writing this expression so many times in this semester. That's by definition n is equal to 0 to or minus infinity to infinity x of n exponential minus j omega n. If it is the sequence is finite, then we can use 0 to infinity. And minus infinity to infinity जो है, that's by definition that's correct, that n can accommodate, this expression can accommodate the infinite length sequence x of n and multiplied with exponential minus j omega n, and then we can get this x of exponential j omega. That is discrete time Fourier transform, which we have been talking so many times. Now we are going to see what is DFT. So x of k क्या है? X of k is the DFT thing. Now this is our DFT thing. It is n is equal to 0 to n minus 1 x of n exponential minus j 2 pi n k over n. And the synthesis equation says it is x of n is equal to 1 over n, k is equal to 0 to n minus 1 x k exponential plus j 2 pi n k over n. And now we are moving towards कि x is DFT और DTFT में क्या relationship है, because we have been talking कि DFT जो है that is linked to DFS. We have seen this relationship. Now we are up to looking the relationship of DFT with this DTFT, because that is the thing we know. DFS तो अभी आई है, अभी हमने बात करना शुरू किया है. DTFT we have been talking for the last 4 months. So our familiarity with DTFT is more as compared to DFS. So let's see कि इनका आपस में relationship जो है वो क्या है. Now we know, just talked कि x of omega जो है that is equal to n is equal to minus infinity to infinity x of n exponential minus j omega n. That's my DTFT. And we have talked that what is our DFT? That is x of k is equal to n is equal to 0 to n minus 1 x of n exponential minus j 2 pi k n over n. Now if you look at it, look at both of these expressions, you will be able to explore that x of k is in fact, or DFT is in fact, the equally spaced samples of x of omega or DTFT. So x of omega is actually, x of k is actually, it is x of omega. यार इसको सीधा होना चाहिए. It is x of omega at omega is equal to 2 pi k over n for k is between 0 and n minus 1, 0 otherwise. Now let's see what it means. Okay, so suppose करें ये मेरे पास एक, मेरा ख्याल है इसको दोबारा कर लिया जाए. चलो मैं इसको उठा देता हूँ. Okay. Suppose this is my x of exponential j omega. And we know that x of exponential j omega is what? It is defined on the unit circle. ये आपका z plane है, complex plane है, real and imaginary, और ये आपका unit circle है. And by definition we know that x of exponential j omega is defined on this unit circle.
That's why it is z, हम z को प्लेस करते हैं r exponential j omega and r is equal to 1 पे आपका x of exponential j omega defined है. We have talked about this so many times. So this is a continuous thing. यहाँ पे जो भी चीज आपको नजर आएगी that would be continuous and that continuity is shown here. ये आपके पास एक एनवलप जो है नजर आ रहा है, ठीक. Okay, now we are interested in exploring or exploiting the relationship of DTFT with DFT and we said suppose करते हैं that we place n is equal to 8 यानी हमारा जो periodic sequence है वो x of n भी of period 8 है और जो x of k है वो भी of period 8 है which is related to x of exponential j omega and we know that x of k is equal to x of omega या x of exponential j omega at omega is equal to 2 pi k over n for k is between 0 to n minus 1, which is 7 in this case. Okay. Okay. Now, suppose k is equal to 0. Let's see what's the value of omega. So omega is equal to 2 pi 0 divided by n is 8. So this is 0. Omega is equal to 0 कहाँ पड़ा हुआ है? This is omega is equal to 0 point. So we say that this is k is equal to 0 के साथ associated point है मेरा इस circle पे. मैं samples की बात कर रहा हूँ because I have talked about this कि DFT जो है यानी x of k जो है वो equally spaced sampled हैं x of exponential j omega k which is defined on the unit circle. So this is one sample which is associated with k is equal to 0. Now let's see what's the value with k is equal to 1. k is equal to 1 के लिए जाते हैं तो omega is equal to 2 pi 1 over 8 which is pi by 4. So ये जो point है अब आपका this is associated with k is equal to 1. For k is equal to 2 omega is equal to 2 pi 2 divided by 8 which is equal to pi by 2. So it means that this point is for k is equal to 2. Similarly, this is for k is equal to 3. This is for k is equal to 4. K is equal to 5. K is equal to 6 and k is equal to 7. So these are the 8 samples which are in fact there was a continuous time function x of omega या x of exponential j omega that was a continuous function of omega but now x of k are the equally spaced samples of our x of omega. So ये 8 samples जो हैं वो मुझे मिले हैं and I am getting x of 0, x of 1, x of 2. So these are the samples I am getting 8 samples for x 0 से लेके x 7 तक against this x of exponential j omega. Please ask questions if you have any questions. That's very important thing. सर अगर हमारे पास यानी कैपिटल जो n है अगर वो हमारे पास ऑड हो जाए तो क्या हो जाए 8 के बजाय कोई और जो फ्लैट सपोज सर ये कुछ भी हो जाए by theoretically we will be having that many samples. Suppose हम कहते हैं n is equal to 5 है. In that case आपके जो samples पड़े होंगे वो 360 divided by 5 पे पड़े हुए होंगे. Equally spaced रखना. सही हो गया सर, सही है सर, थैंक यू. Okay, so padding with zeros. अभी हमने क्या किया? And that's related to the question asked अभी थोड़ी देर पहले. हमने कहा कि हमने जितने पॉइंट्स अंदर भेजे 8 पॉइंट सीक्वेंस अंदर भेजा और हमने 8 पॉइंट सीक्वेंस बाहर निकाल लिया. ठीक है. So इस केस में क्या हो रहा है? Suppose we have an n point finite length sequence x of n and as a result of that x of k is defined like this. We have been seeing it. N is equal to 0 to n minus 1 x of n exponential minus j 2 pi n k over n where k is between 0 and n minus 1 0 otherwise. There is a possibility that you place some zeros at the end
or at the beginning of some sequence, and then you throw in that thing into this x of n. Now considering this 0 is included in x of n, in that case you're throwing in this now you are not throwing in three samples, you are throwing in 4 samples. So as a result of that, you will be getting 4 samples out of x of k. So possible to start with n point sequence. In this case, it's a 3-point sequence, and pad it with bunch of zeros. We have padded it with just 1 0 to get an m point sequence. M is 4 in this case, and then taking its m point DFT. That's important. That now you will be taking m point DFT, which is defined as x of k is equal to 0 to m minus 1, x of n exponential minus j2 by. अब आ रही है? जी सर, अब आ रही है सर. Okay, so x of k will be equal to n is equal to 0 to m minus 1, because we are interested in taking m point DFT, and here you will be dividing by m as well, because k is running from 0 to m minus 1. So that's important, and you will be seeing the consequences of this concept right now. Okay, so in this case, x of k will be defined for m values of k. Why is this useful to do? In fact, we will be seeing it here. Suppose x of, but I think before coming here, I will be using this example to answer that. Okay, so consider a 4-point sequence x of n 1 2 3 4. शरोज बेटा आवाज आ रही है ना? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर अभी. Okay, great. So x of n is equal to 1 2 3 4. This is x of n 1 2 3 4 0 1 2 3, and we have to find its 4-point DFT, which is quite normal thing, because x of n is a 4-point. So as a result of that, the DFT will be a 4-point sequence as well. So x of k will be equal to n is equal to 0 to 3 x of n exponential minus j2 pi nk over 4, and we will be getting x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, because we will be summing up the 4 terms in all the 4 cases for different values of n's and k's. And this is x of 0, which is x of 0. I'm talking about capital X of 0. K is equal to 0 की बात मैं कर रहा हूँ. So in that case, that would be equal to n is between 0 and 3, x of 0 e raised to power minus j0, because k is equal to 0, plus x of 1 exponential minus j0, plus x of 2 exponential minus j0, plus x of 3 exponential minus j0. This 0 is because k is equal to 0. This is k. So as a result of that, all these terms are 0. So exponential of these will be equal to 1. So as a result of that, x of 0 will be equal to 4 plus 3 plus 2 plus 1. You will be getting 10. Now, the second part of this example says that we have to find out the 5-point DFT. Now the 5-point DFT, now we are going towards padding of zeros and m point concept. Now look at this. So suppose I am introducing a 0, I'm padding this sequence with 1 0. So this is an extra 0 there. Now it's a 5-point sequence. These 5 points are going into this DFT block, and as a result of that, I'm getting 5 points, which is x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, and x of 4. So what I'm doing, x of k, now it's an m point DFT. जरा गौर से देखिए, n is equal to 0 to 4 है. x of n exponential minus j2 pi nk over 5 है. But the important thing is, because as you have inserted a 0 at the end of this, so इस sequence की value जो है, इस पहले sample की value वो आपकी change नहीं हुई है. x of 0 is equal to x of 0 exponential j0 plus x of 1 exponential j0, x of 2 exponential minus 0, and so on. And finally x of 4 exponential minus j0, but x of 4 is equal to 0. So as a result of that, the value is 10, which was same here.
XF4 के केस में भी, यानी 4 पॉइंट DFT के केस में भी वही वैल्यू आपको मिली जो कि XF0 की, जो कि आपको 5 पॉइंट DFT में मिल रही है। ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यूज जो हैं आपको X1, X2, X3 एंड X4, ये वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, ये वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। वजह क्या है? तो नाउ टू आंसर दिस, and similarly we can have 100,000 point DFT as well. What I will be doing, I will be introducing 996 zeros में add कर दूंगा. I will be passing this 1000 point sequence through this DFT block, and as a result of that I will be getting 1000 points in the DFT domain. But one thing to remember, that X of 0 will be again 10. That would not be changed. Yes, the other samples will be, because they are coming closer and closer, so the values will be different, but X of 0, the start of that will be equal to 10, and that's why it is shown here that suppose these are the values. जब मैंने 4 point DFT suppose find out किया था तो ये situation थी. I am doing it again. So suppose ये situation थी मेरे पास, ये sample था मेरे पास, suppose that was equal to 10, that's my X of 0. Then I have obtained X of 1, then I obtained X of 2, and suppose that was my X of 3. So this is my X of 1, that's my X of 2, and that's my X of 3. These are the samples. मैं samples नहीं बना रहा हूँ, बस just मैंने यहाँ पे नोट करा दिया, ठीक है? अच्छा, ये 4 point DFT से एसोसिएटेड है। अगर मैं 5 point DFT पे जाता हूँ, what will happen? इस केस में मेरा ये सैंपल जो है ये X of 0 ही रहेगा, रेड जो है वो 5 पॉइंट है और ब्लैक जो है ये 4 पॉइंट DFT, ठीक। ये X of 0 रहेगा, लेकिन अब इसी जोन में मुझे कितने पॉइंट्स को अकोमोडेट करना है? 5 पॉइंट्स को अकोमोडेट करना है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगला पॉइंट हो सकता है वो इधर आ जाए, दैट वुड बी X of 1, then this would be X of 2, and that would be X of 3. Finally, probably this one or maybe overlapping X of 4. So now these are 5 overlapping points. अब ये बताइए क्या इसने हमें कोई नई इंफॉर्मेशन दी है? इन 5 पॉइंट्स ने कोई नई इंफॉर्मेशन दी है एज व्हेन यू कंपेयर इट विद द प्रीवियसली ब्लैक में जो 4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, कोई नई इंफॉर्मेशन मिल रही है? In fact, there is no new information. The only thing is कि आप अपनी सिग्नल की जो X of K की रेजोल्यूशन जो है वो आप बढ़ा रहे हैं। सपोज अगर मैं कहता हूं 1000 पॉइंट DFT है तो 1000 पॉइंट भी इन्हीं के दरमियान ही डिफाइन होंगे, एंड ऑफ कोर्स दे विल बी डिफाइंड वेरी क्लोजर टू ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई द रेजोल्यूशन और द ग्रैनुलैरिटी जो है इस X of K की, that would be increased. So that's the advantage of moving into padding zeros and having the more resolutionary X of K. Any questions? सर लास्ट सैंपल जो है उसकी वैल्यू भी तो डिफरेंट होगी ना, बस पहले की हमारे पास सेम होगी। अगर लेट्स सपोज अगर हमारे पास लास्ट सैंपल ओवरलैप कर रहा है तो उस केस में भी वैल्यू सेम आएगी। सेम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सेम हो सकती है, हो सकती है, दैट डिपेंड ना कि देखिए सपोज हम इधर बैठे हुए थे, इसको इस तरीके से हम देखते हैं। सपोज आपने मेरा ख्याल है क्वेश्चन किया था कि अगर सपोज 8 इक्वली स्पेस सैंपल्स हैं यूनिट सर्कल पे, तो 360 डिवाइडेड बाय 8 कुछ वैल्यूज आ रही हैं। सपोज क्या आ जाएगा ये 8 4s are 32 and 45 डिग्री, ठीक है। सो स्पेसिंग जो है वो क्या है, यही चल रही है, यस सर, ठीक है। एंड फाइनली जो आखिरी पॉइंट है वो आपको मिल रहा है 360 माइनस 45 315, ठीक। तो ये 7 सैंपल्स इन जगहों पे पड़े हुए हैं,
ठीक है, अगर सपोज मैं कहता हूं n इज इक्वल टू 7 है, in that case that would be 360 divided by 7, and that would be slightly higher than this thing. 7 5s are 35 ones, and then 3 something like that. ठीक, पहला सैंपल 0 पे है, फिर उसके बाद 51.4 पे है, फिर इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, एंड द फाइनल सैंपल्स विल बी 360 माइनस 51.4. ठीक है, तो ऑफ कोर्स हो भी सकता है, अगर तो मल्टीपल इक्वल आ गए हैं तो आपको सैंपल बराबर मिल भी सकता है, और अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं आएगा. ठीक है, यस. एंड सिमिलरली हियर एज वेल द सेम सिग्नल. ये आपका 8 पॉइंट सीक्वेंस था, अगर यहाँ पे मैं 16 पॉइंट सीक्वेंस की बात करूंगा तो क्या होगा. 16 पॉइंट सीक्वेंस देखिए तो ये आपके 8 पॉइंट्स डिफाइन थे, ये जो रेड पॉइंट्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके 8 पॉइंट डीएफटी से एसोसिएटेड थे. अब अगर मैं 16 पॉइंट डीएफटी लेता हूं तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अब आपके पास एक पॉइंट यहां भी आ जाएगा, एक पॉइंट यहां भी आ जाएगा, ये सैंपल्स हो जाएंगे. ठीक है, तो अब ये 16 इक्वली स्पेस सैंपल्स हैं, और अगर आप इस एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा एक्सेस पे देखें तो एक और सैंपल बीच में आ गया, यहाँ इन सब के बीच में एक एक और सैंपल्स आता जा रहा है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन जो है सीक्वेंस की, सिग्नल की या इस स्पेक्ट्रम की, वो ज्यादा बेहतर हो गई एज कंपेयर टू व्हेन वी वर टेकिंग द 8 सैंपल्स ऑफ दैट. Got it? So important thing is to keep it in mind that DFT is actually the same information which is coming from DTFT, but DTFT is a continuous signal because omega is continuous, and DFT is equally spaced samples of DTFT. Any questions? शरोज बेटा आवाज आ रही है? यस सर. So we did this. Now just a summary of what we did till now, that DTFT, DFS और DFT blocks के अंदर क्या जो है relationship है. We DFS और DFT के दरमियान जो relationship है, we know that x of n is defined. This is for finite length sequence, and that's defined for periodic sequences. यहाँ पे आपको पास एक finite length sequence मिलेगा at the output of the DFT block, और at the output of the DFS block you will be getting again numbers, but these numbers will be periodic with the same period, जो कि जिस पीरियड के साथ x tilde of n था उसी पीरियड के साथ आपका x tilde of k होगा, and one period of that is in fact x of k. But when we talk about DTFT and DFT, we know that the numbers are going in. इसके अंदर भी सीक्वेंस जा रहा था, इसके अंदर भी सीक्वेंस जा रहा था, बट जो चीज DTFT ब्लॉक से बाहर आ रही थी that was a continuous thing. X of omega or x of exponential j omega is a continuous thing which is defined on the unit circle, but x of k are the equally spaced samples of this x of exponential j omega. So that's why these are the numbers, these are bunch of numbers. X of k जो है ये numbers, and these numbers are important because these can be represented in digital systems, and that's why we can have our multiplication in frequency domain to get the convolution in the time domain, which was the actual requirement of moving from continuous time signal processing to digital signal processing. Any questions? And what's the limitation of DFT when compared with DTFT? The most important limitation is that x of n is defined or can be defined for infinitely length sequences. So x of n infinite length का भी हो सकता है, whereas in DFT it is only defined for finite length sequences. So that's the limitation of DFT. Now, any questions? शरोज बेटा हाँ ना ही कर दो. आवाज आ रही है?
यस सर। यस सर। बेटा मुझे इससे Yes, ये sir. पता चलता रहता है कि आपकी अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आप जो गुमसुम होके बैठ जाते हैं ना, मुझे कंफ्यूजन होती है कि मेरी आवाज भी जा रही है या नहीं जा रही, इसीलिए मैं पूछता रहता हूँ कि कोई क्वेश्चन कोई चीज भी इंटरेक्टिव। खैर अब क्या होगे, इट्स 14th week. Okay, so again we continue the summary that for a periodic signal the DFS coefficients and DFT are the same. ठीक है, अगर एक पीरियोडिक सीक्वेंस है और आपको कहा गया है कि उसका आप डीएफटी लीजिए, तो इन दैट केस व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ डीएफटी ब्लॉक एंड व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ डीएफएस ब्लॉक, दैट वुड बी सेम. ठीक है, एंड इफ वी टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल, दीज आर द इंपल्सेस एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दीज इंपल्सेस आर इक्वल टू द डीएफएस कोएफिशिएंट्स. जी बेटा क्लियर है, आगे चलें. यस सर. Now we are moving towards the properties of DFT and DFT में हमें जो चीजें देखनी है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सर्कुलर कन्वोल्यूशन. एंड सर्कुलर कन्वोल्यूशन में जो शिफ्टिंग यूज हो रही है दैट इज इनफैक्ट पीरियोडिक सर्कुलर शिफ्ट जो है कन्वोल्यूशन में यूज हो रही है. सो लेट्स टॉक अबाउट circular convolution first and then we will be talking about circular convolution. Okay, सबसे पहले देखते हैं circular shift को. What is circular shift? Normally जब आप shifting करते हैं x of n की, ठीक, आपके पास x of n है, आप DFT में x of k की तरफ जाते हैं एंड बाय x of exponential j omega डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो व्हाट वी वर डूइंग इट इज लाइक दिस कि x of n का फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म x of exponential j omega है. अगर टाइम डोमेन में हम शिफ्ट करते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू इंट्रोड्यूसिंग अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन x of exponential j omega, and we have introduced this exponential minus j omega chapter number 2 DTFT properties and the exponential minus j omega n naught. जितने की शिफ्ट आपने टाइम डोमेन में दी थी उतना ही फेज टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती. कैन वी डू द सेम हियर? लेट्स सी, x of n जो है उसका DFT जो है वो x of k है. सो इफ आई डू x of n minus n naught, जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो हमें बताती है तो ओके लेट्स डू इट x of k और इंट्रोड्यूस अ फेज टर्म व्हिच इज x एक्सपोनेंशियल माइनस j 2 pi n naught कह लें इसको, n naught k over n. कैन वी डू इट? द आंसर इज नो. व्हाई नॉट? बिकॉज अब जरा इस शिफ्ट को गौर से देखिएगा कि हो क्या रहा है. सपोज ये मेरे पास x of n है व्हिच इज 0 से n minus 1 तक डिफाइंड है, period n है इसका, and rest of the samples are 0. Now I am interested in doing x of n plus 2. What I have to do? I have to drag it to this side. What will happen? ये sequence यहाँ चला आएगा, ठीक, और as a result of that यहाँ पे zeros आ जाएंगे. ठीक है, so इस बात का क्या मतलब हुआ? This is making the samples non-zero between the indices other than 0 and n minus 1. We are interested 0 से n minus 1 is the zone of interest. अब क्या हो रहा है, जब आपने इसको ड्रैग किया है तो ये -2 पे चला गया है, ये वाला सैंपल -1 पे चला गया है, और ये वाला जो सैंपल n पे पड़ा हुआ था ये n minus 2 पे, और ये जो है n पे आ गया, n minus 1 पे आ गया. सो अब आपका जोन ऑफ इंटरेस्ट में सीक्वेंस बदल गया है, which we don't want. हम अपने सीक्वेंस को नहीं बदलना चाहते. That's my major problem कि हम इस तरह से इसको नहीं लिख सकते. चलें अब फिर कैसे लिखा जाए. इनफैक्ट अगर मैं इस सीक्वेंस को कंसीडर करूं कि ये एक पीरियोडिक सीक्वेंस इसका बनाऊं which is x tilde of n, यानी ये सीक्वेंस है, फिर उसके साथ आगे है, फिर उसके पीछे है, इसी तरह से इसको रिपीट करता चला जाऊं, तो then I will be having a periodic sequence because मेरा zone of interest जो है वो ये है 0 से n minus 1 तक. अब मैं इसको शिफ्ट देता हूं x of यानी x tilde of n plus 2. क्या होगा? पीरियोडिक शिफ्ट है. पीरियोडिक शिफ्ट से क्या होगा, ये वाले दो सैंपल्स अंदर आ जाएंगे, ये वाले दो सैंपल्स बाहर चले जाएंगे, which is the this is the case here.
और अब अगर मैं इसका एक पीरियड ले लूं तो दैट वुड बी दिस थिंग. सो इन DFT जो हमारी सर्कुलर शिफ्ट है जो DFT ब्लॉक में, दैट इज इन फैक्ट इक्विवेलेंट टू phenomena is different, and that is considering the signal x of n, considering it as periodic and then shifting, and then taking the one period. That is called the circular shift, and conceptually that would cope with the concept of the DFT. So circular shift किस तरह से हो रही है? Suppose this is a sequence 1 2 3 4 0 1 2 3 पे मेरे पास एक sequence है 0 1 2 3. These are the indices जो अंदर पड़े हुए हैं सर्कल के, और 1 2 3 4 ये मेरे पास x of n पड़ा हुआ है 1 2 3 4. फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस है, बट आई एम कंसीडरिंग by virtue of its relationship with discrete Fourier series, I'm considering, suppose that it was a periodic sequence, and now that periodicity is bringing in this circular concept. So as a result of that, what's happening? So 1 2 3 4, and if I am interested in x of n minus 2, I will be flipping or the dragging the signal clockwise, and if I am interested in x of n plus 2, I will be doing this operation counterclockwise. So as a result of that, जो चीज पड़ी हुई थी x of n minus 2 के लिए, जो चीज 2 पे पड़ी हुई थी वो उठ के x of n minus 2 में वो कहाँ चली गई है? वो 0 पे चली गई. So it is there. जो 2 पे थी वो 3 पे आ गई, जो 1 पे थी 1 पे 2 था तो वो 3 पे आ गया. इसी तरह से आपने उसको रोटेट कर दिया. Questions please. This is our circular shift inherited from periodic shift. The only difference is that periodic shift was actually for the periodic sequences, but circular shift is actually doing the same thing, but considering that we had a finite length sequence, but having similarity or with the DFS of DFT. So we are considering the periodicity of the sequence and then taking one period of that. So it is becoming the circular shift now. Sheroz, any question, beta? Sheroz? No, sir. सर जी बोले. सर ये जो सर्कुलर शिफ्ट में जो हम सर्कल के जरिए हम ये इस तरह एक्सप्लेन करते हैं सर, ये x -2 और x n+2 ये सिर्फ इसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेंज होती है सर, वैल्यूज तो सेम ही आएंगी इन दोनों में. जी जी वैल्यूज सेम, वैल्यूज में तो कोई चेंज नहीं आनी. आई मीन वो शिफ्टिंग तो होगी बट सीक्वेंस की 1 2 3 4 तो रहेंगे ना. 1 2 3 4 तो अपनी वो है ना, वो शिफ्ट हो रहे हैं. यस सर. ये क्वेश्चन आपने क्यों किया? इसके पीछे लॉजिक क्या थी? मुझे समझ नहीं है क्या. मैंने ये कहा है ना सर, x n-2 है तो वो राइट साइड पे जो होगा वो शिफ्ट होता है, और n+2 है वो लेफ्ट साइड पे. लेकिन सर इस सर्कल के जरिए हम देखते हैं तो वो सेम जगह पे यूज की वैल्यूज आती हैं 1 4 3 2 जो है, चाहे हम लेफ्ट साइड वाली करें या राइट साइड पे. नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है. सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है, सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है विच इज okay, it is 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4. so मैं इसकी शिफ्ट देखना चाहता हूं. so 5 आप बना लीजिए, क्या हो जाएगा? 5 सैंपल्स हैं, 2 3 4 and 5. so index 0 1 2 3 and 4. 0 पे 2 रखा हुआ है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है. सो ये मेरे पास जो है 2 3 4 5 and 6. These are my sample values, or 0 1 2 3 4, these are my indices. So that's my x of n
finite length sequence, and of course यहाँ पे भी मैं कहता हूँ ये मेरा x of n है, circularly represented. Now I'm interested in doing x of n minus 1. x of n minus 1 क्या होना चाहिए? Again a circle, indices 0, 1, 2, 3 and 4, and this time these are the sample values. So क्या होगा? x of n minus 1 है, तो x of n minus 1 का मतलब है I am interested in shift जो shifting है clockwise. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5 and 6. I have used this operation to obtain this x of n minus 1. If I am interested in x of n plus 1, in that case what will happen? इसी में देख लेते हैं. x of n plus 1 के लिए क्या हो जाएगा? That would be अब आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. So that would be so that's एंटी क्लॉकवाइज. इसको आपने घुमाया तो आपको x of n plus 1 मिलेगा रेड में. ठीक है? यस सर. यही क्वेश्चन था ना आपका? यस सर, यही था. थैंक यू सर. इसमें सैंपल वैल्यूज जो हैं वो चेंज नहीं होती हैं. किसी भी शिफ्ट के नतीजे में सैंपल वैल्यूज चेंज नहीं हो रही हैं. दे आर बीइंग शिफ्टेड, दैट्स इट. यस सर. चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करें. ठीक है सर. Okay. Now we move to circular convolution. And we know that linear convolution में क्या था कि आपके पास दो sequences हैं, x1 of n, x2 of n. आप इनको convolve करते हैं तो discrete Fourier जो Fourier transform domain में या DTFT domain में you are getting x1 of omega, you are getting x2 of omega. और अगर आपको frequency domain में multiply करें तो that would be equivalent to convolution in the time domain. अच्छा, तो let's see कि अब क्या property है आपकी. Now we have a finite length sequence x1 of n. We have a finite length sequence x2 of n. This time we are interested in getting the convolution, but this time the convolution is circular convolution. Here it is linear convolution. Here it is circular convolution. Your notation different hai because we know that x1 of n or x2 of n को हम x1 of k और x of 2 of k which are the DFT में convert कर रहे हैं. But that would be equivalent to multiplication in the DFT domain. ठीक है? अब जो x1 of n और x2 of n आपको given है, that is this thing. 1, n is between 0 to l minus 1. ये आपका x1 of n और x2 of n given है आपको. Now it is said कि आप n point circular convolution करिए where n is equal to l और case 2 में है n is equal to 2l. Okay, let's start this. n is equal to l के लिए करते हैं. पहला काम क्या है? पहला काम ये है कि आप x1 of k और x2 of k, because we are interested in doing this convolution and actually we are interested in doing this multiplication in frequency domain, x1 of k or x2 of k की multiplication and then getting the IDFT and finally that would be the result of my convolution, circular convolution. So let's find out what is x1 of k and what is x2 of k, because both are the same. So x1 of k and x2 of k will be same. So this is equal to L. Why it is L? Because x1 of k is okay, x1 of k will be equal to x2 of k and that's equal to n is equal to 0 to l minus 1. Just by definition, x1 of n exponential minus j 2 pi n k over l, because length of the sequence is l point. So as a result of that, you are getting l for k is equal to 0, 0 otherwise. Okay, in fact ये situation थी आपकी sequence की. So these were the samples. So suppose this was the situation 0,
L minus 1. So all these samples were equal to 1. Rest of the samples were 0 for x1 of n, x2 of n. So this is my x1 of n equal to x2 of n. And now we have obtained x1 of k and x2 of k, which is equal to L. And this is the thing. L for k is equal to 0. And for all other values of k, x1 of k and x2 of k are equal to 0. Now x3 of k kya hoga? Because we have obtained this, x3 of k is multiplication of x1 of k and x2 of k by definition of the properties. That would be L square for k is equal to 0, 0 otherwise. And now if I'm interested in the result, what is the result of this convolution x1 of n circularly convolved with x2 of n? So that is nothing but that is IDFT of what? Of x3 of k. So we take this x3 of n, which is IDFT of x3 of k, that is equal to L between 0 and L minus 1 and 0 otherwise. You can confirm this. Now, was this the result you were expecting? Meritaba, your comments required. No sir, L की जगह 1 amplitude होना चाहिए था. फिर दोबारा सोचिए. Suppose आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में ये कन्वोल्यूशन की होगी, बल्कि अभी रिसेंटली आप कर रहे हैं ये कन्वोल्यूशन अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में. आपके पास अगर एक ब्रिक शेप्ड फंक्शन है, आपने इसी सीक्वेंस को अपने साथ, सपोज दिस इज माय एक्स एस एफ टी है, टाइम डोमेन में बैठे हुए हैं, आप एस एफ टी को सेल्फ कन्वॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आता है आपका? ये तो उस दिन मैं आपका लेक्चर देख रहा था, कासिम साहब करा रहे थे. सर सेम चीज आती है, यही आती है. आपका नाम क्या है? उस्मान सर. उस्मान बेटा, रेक्टेंगुलर, अगर रेक्टेंगुलर के साथ कन्वॉल्व हो तो आपको सेम रेक्टेंगल मिलती है? नहीं सर, ट्रायंगुलर फंक्शन आता है सर, पहले इंक्रीज होगा उसके बाद डिक्रीज होगा. ग्रेट, ट्रायंगुलर चीज मिलती है. वेरी गुड. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रेक्टेंगुलर उठाते हैं, ये रेक्टेंगल है, आप इस रेक्टेंगल को इसी रेक्टेंगल के साथ कन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी x1 ऑफ k x2 ऑफ k की मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो ये हुआ ना, टाइम डोमेन में आप इसे कन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू आर गेटिंग दिस फंक्शन. ये आपको फंक्शन मिल रहा है x3 ऑफ n, यानी उस कन्वोल्यूशन का रिजल्ट. सो इस बात का मतलब है कि कोई गलती हो रही है, ये कन्वोल्यूशन गलत है, कन्वोल्यूशन को इस शेप में होना चाहिए था, कन्वोल्यूशन इस शेप में वापस आ रही है. सो देयर इज समथिंग रॉन्ग. कम से कम ये आइडेंटिफाई करने की पोजीशन में आपको होना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग. ठीक है, गॉट इट? यस सर, यस सर. यू मस्ट अप्रिशिएट कि ये गलत है, ये इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, आगे जाके देखते हैं कि क्या गलती है, बट the basic thing is that you should know that it is wrong, that when a rectangle is convolved with rectangle, the result is not a rectangle, it's a triangle. ठीक है, why? Because होता क्या है, हो ये रहा है कि आपके पास सपोज ये रेक्टेंगल है और दूसरी रेक्टेंगल है, दूसरी रेक्टेंगल को आप फ्लिप करते हैं और फिर उसे ड्रैग करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 0 आ रहा है. फिर आप इसको आगे लेके जाते हैं, इसको मैं ब्लैक में ले जाता हूँ, अब आप इसको ड्रैग करते हुए अब इस तरफ लेके जा रहे हैं. एक टाइम आता है जब ये ओवरलैपिंग स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद एंड यू स्टार्ट गेटिंग सम नॉन जीरो वैल्यूज, और फिर उसके बाद ये ओवरलैपिंग बढ़ती चली जाती है जब आप इसे ड्रैग करते जा रहे हैं. एट अ टाइम कम्स जब ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है. सो ओवरलैपिंग स्टार्ट होती है, ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है, और फिर उसके बाद जब आप इसे राइट साइड पे फिर ड्रैग करते जा रहे हैं टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, तो ये ओवरलैपिंग कम होती चली जाती है. सो दिस इज व्हाई वी आर गेटिंग this triangular shape. Got it? Yes sir.
ओके चलें, पहले उसका 2 एंड पॉइंट सीक्वेंस करने से पहले, क्योंकि यहाँ हमारे पास केस 1 था L point and case 2 था 2L point. But before doing that, I will be solving this thing. So suppose x of n is equal to 1, 2, 3, 4. h of n है 1, -1, 2, -1. अब x of n के अंदर कितने सैंपल्स हैं? 4 सैंपल्स हैं. h of n के अंदर 4 सैंपल्स हैं. अगर मैं लीनियर कन्वोल्यूशन करूं तो रिजल्ट इज इन फैक्ट y of n is equal to x of n convolved with h of n, and the result of this y of n will be 4 plus 4 minus 1, which is 7 samples. We know it. And suppose these samples are 1, 1, 3, 4, 0, 5, minus 4. ठीक है, अब जरा इसकी अगर हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन करें, लेट्स डू इट. क्योंकि कल तो हमारे पास टाइम नहीं था, अब हमारे पास टाइम है. लेट्स डू द सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑफ दीज टू सैंपल्स. ठीक है, मेरे पास x of n है, मेरे पास h of n है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस y of n. ठीक है, लीनियर कन्वोल्यूशन का रिजल्ट एक्चुअली मुझे ये चाहिए. ठीक, नाउ अगर मैं DFT डोमेन में जाता हूं तो DFT डोमेन में मेरे पास इनहेरेंट जो कन्वोल्यूशन मौजूद है, that is circular convolution. So I will be doing the circular convolution of these two finite length sequences, which will be equivalent to multiplying x1 of x of k with h of k, which are the numbers. I will be multiplying those numbers. In fact, जो circular convolution है, it is equivalent to multiplying the numbers in k domain or DFT domain and then taking the inverse discrete Fourier transform. So let's see, जब मैं circular convolution करता हूं इन दो sequences की, तो क्या मुझे ये रिजल्ट मिलता है? लेट्स सी इट. ओके, सो मेरे पास x of n है 1, 2, 3, 4, and my h of n is, why not write it here? H of n is 1, -1, 2, -1, and now I will be doing the circular convolution of these two numbers, which will be equivalent to taking the x of k, h of k, multiplying it, and then taking the inverse discrete Fourier transform. So let's do the circular convolution. And पहला सैंपल मैं लूंगा, तो पहला काम तो क्या करना है मुझे? सबसे पहले मैं x of n को सपोज उसी तरह से okay, so let's suppose that's my index. में indices जो है उनको रेड में लिख देता हूँ. This is my index 0, 1, 2 and 3, and I flip this x of n because I have to flip one signal and then drag the other one. So I take this signal, x of n is 1, this my x flipped version of x of minus n हो रहा है 1, 2, 3 and 4. This is the flipped x of minus n हो गया. ठीक, and then I will be taking 1, -1, 2 उसी तरह से जैसे वो है 1, -1, 2, -1, and as a result of this 1 multiplied by 1 is 1, -2 plus 6 -4, and that's equal to 1. Okay, that's equal to 1. Okay, अगला सैंपल अगर लेना है तो मैं क्या करूंगा? I will be dragging, so I will be making x of 1 minus n. x of 1 minus n क्या होगा? I will be clockwise में डायरेक्शन में मूव करूंगा. y को आप उसी तरह से रहने दीजिए, which is 1, -1, 2, -1. अब क्या है? अब मैं क्लॉकवाइज आ रहा हूँ. So इस बात का मतलब है मेरे पास 0 जो है, सॉरी मेरा जो 2 सर, एट 12 o'clock. जी 2 जो है वो मेरा कहाँ आ जाएगा? इधर. This 2 will be placed here, 1 will be here, 4 will be here, and 2, 1, 4 and 3 will be here.
So as a result of that, मेरे पास जो सैंपल आ जाएगा that would be 6, because 2 minus 1 plus 8 minus 3 and that is equal to 6. तीसरा सैंपल्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो वी आर इंटरेस्टेड, यानी ये सैंपल्स मेरे y वाले सैंपल्स आप उसी तरह से रखते हैं, 1 minus 1 2 minus 1 and 2 3 4 and 1, and as a result of that 3 minus 4 plus 2 minus 2 that is equal to 0. and finally जब आप करेंगे इसको, so that's associated with x of 2 minus n के साथ associated है, और फिर इसी तरह 1 minus 1 2 minus 1 and that is 1 4 3 2, and the multiplication will result in 4 minus 1 plus 4 minus 3 is equal to 4. So the result of this convolution is, this is circular convolution, and the result is 1 6 minus 1 4. Result is 1 6 minus 1 4, and that result is wrong as well. Remember, we were doing this convolution, that result was wrong, that is against our expectation or our previous knowledge, and that is against the requirement. Actually ये result चाहिए और आप ये result आपको मिल रहा है, और अगर ये situation है तो everything evaporate in thin air, we don't need it. मुझे circular convolution इस वजह से चाहिए because x1 of n और y of n, h of n का जो discrete Fourier transform है, these are the numbers and I want to exploit this property कि x of k और h of n को मैं multiply करूं frequency domain में, तो जो numbers मेरे पास आए उनका मैं inverse discrete Fourier transform लूं, तो जो मुझे convolution मिले वो actual इस convolution के equivalent होनी चाहिए. But when I perform this circular convolution, I'm not getting the same result. So मेरे लिए किसी काम की नहीं है ये circular convolution. There is some problem with this circular convolution result, and if you see closely, तो क्या situation develop हो रही है? Let's see it. देखिए linear convolution का जो मेरा result है वो है 1. This is very important concept, जरा गौर से इसको देखिए. 1 1 3 4 0 5 minus 4. That's the result of my linear convolution. This is it. 1 1 3 4 0 5 minus 4. And what is the result of my circular convolution, or what I have obtained here? It is in fact, sorry, क्या result आ रहा है मेरा? That is 1 6 minus 1 and 4. जरा गौर से देखिए, कोई चीज आपको ऐसी है जो कि हिट कर रही हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर इस 0 5 और -4 इधर लेके आओ, एज इट इज आ रहा है. नहीं, जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए. 0 5 और -4, देखिए 4 पॉइंट DFT आपने लिया था ना, आपने 4 पॉइंट DFT लिया था. सो 4 पॉइंट्स आपने वैसे रहने दिए, जो बाकी 3 पॉइंट्स थे आपके कन्वोल्यूशन के रिजल्ट के, आपने उनको उठाया और फर्स्ट पॉइंट्स के साथ ऐड किया. सो 1 + 0 is 1, 1 + 5 is 6, 3 - 4 is -1, 4 + 0 is equal to 4. सो क्या हो रहा है? Is it by chance or there is some methodology behind it? अब by taking FFT of x1 of n or x of n and h of n and multiplying, getting x of k and h of k, and then taking the IFFT,
we get 1, 1, 6, minus 1 and 4, which is in fact the circular convolution. But we need the result of linear convolution, which is written in black, 1, 1, 3, 4, 0, 5, minus 4. Now what to do? अब जरा गौर से देखने वाली चीज है, देखिए एक्सपेक्टेड लेंथ क्या थी आपके सीक्वेंस की, जो ओरिजिनल कन्वोल्यूशन आपको रिक्वायर्ड है, विच इज लीनियर कन्वोल्यूशन, वो रिक्वायर्ड है आपकी 7 है। आप इस वक्त ले रहे हैं 4 पॉइंट DFT, सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये आपको एलियासिंग मिल रही है। दिस इज काइंड ऑफ एलियासिंग कि आपके जो पॉइंट्स हैं जो 0, 5, माइनस 4 हैं वो एड अप, रैप अराउंड होके वो आपको एड अप होके मिल रहे हैं दोबारा आपके रिजल्ट में। तो अगर मैं ऐसा करूं कि मेरे पास x of n था जिसके which was 4 पॉइंट, ये x of n था, मेरे पास 4 पॉइंट था। अगर h of n था which was of 4 point, but the original length of my convolution is 7 point. So if I do कि x of n को भी 3 zeros पैड करके मैं 7 point sequence बना लूं, h of n को भी 0 पैड करके मैं 7 point sequence बना लूं, because I know that by padding the zeros is not introducing a new information, it is just increasing the resolution of that, and then x of k और h of k जो हैं ये मेरे 7 point sequences होंगे. So when I will be multiplying that, that would be equivalent to x of n और h of n की circular convolution के equivalent होगा, but this time ये 7 point पे convolution हो रही होगी, and as a result of that जो आपको result मिलेगा that would be equivalent to the linear convolution. That was a claim. Let's do it. ठीक है. So the idea is कि मेरे पास x of n जो initially था that was equal to, what was that? 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Now as the expected length of my h of n जो था वो था मेरे पास 1, 1, 1 minus 1, 2, 1. यही था ना? 1 minus 1, 2 minus 1. 2 minus 1. Okay. So now the expected length of the convolution is 7. So I'm making both of these sequences of length 7. I'm introducing extra zeros. I'm padding extra zeros in x of n and h of n. So this time, अब आपकी जो circular convolution होगी वो 7 point पे होगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is my indices. So that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these are my indices. मैं 1, 2, 3, 4 इसको ब्लैक में कर देता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0. This is my x of minus n, and my h of n is 1, minus 1, 2, minus 1, 0, 0, 0. What is the first value? Charos, what's the first value? 1, sir. 1, sir. 1. Good. Because 1 is multiplied by 1. Rest of all the samples जो हैं वो zeros हैं. Minus 1 into 0, 2 into 0, minus 1 into 0, 0 into 4, 0 into 3, 0 into 2. The first value is y0 is equal to 1, which is now this value. Initially जब आप 4 point DFT कर रहे थे तो आपको ये 1 मिल रहा था, but that was a coincidence. Let's see this. Second sample देखते हैं अपनी convolution का. Again it is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are my sample values 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, this time 1, 2,
3 4 0 0 0. दिस इज माई एक्स 1 माइनस n की बात हो रही है जो रेड में लिखा हुआ है, और ये 1 minus 1 2 minus 1 0 0 0. Now what is your y of n? That's equal to 1 multiplied by 2 2. 1 multiplied by minus 1 is 1. So that's equal to 1 because rest of the samples are equal to 0 again. So 2 minus 1 is equal to 1. Let's see what's my value again. Now this is your 1. Let's have the third value and then you can calculate the rest. 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 and 6. So it is 1 minus 1 2 minus 1 0 0 0, which is h of n की बात हो रही है, और फिर it is 2 3 4 1 0 0 and 0, and now y of 2 will be equal to what? 2 minus 2 plus 3, and rest of the samples are 0. So as a result of that, you're getting 3, which is shown here. So in order to make circular convolution gives you the result which is equivalent to linear convolution, which is our requirement, what you will do, you will pad extra zeros to your original sequence, and as a result of that circular convolution, you will be getting your result which will be equivalent to linear convolution, which is actual requirement of ours. Questions, Peter? शेरोज सर ये जिसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा जीरोस ऐड की हैं उसमें हमारे पास ट्रायंगुलर फंक्शन तो नहीं आ रहा, यानी पहली वैल्यूज हम उसको देख रहे हैं, यानी पहली वैल्यू हमारे पास ये ट्रायंगुलर वैल्यूज क्यों आएंगी बेटा? ये तो 1 2 3 4 है, ये 1 1 1 1 तो नहीं है, ये कोई रेक्टेंगल तो नहीं है, क्यों आएंगी ट्रायंगुलर वैल्यूज? सही है सर। वो और एग्जांपल थी बेटा, वो और एग्जांपल थी, ये एक दूसरी एग्जांपल हमने की थी, ठीक है ना? 1 2 3 तो बेटा यस सर समझ आ गया, इस तरह का रैंप है, सही नहीं ठीक है मेरे ताबा? एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। जी, और साहिबान जो बैठे हुए हैं, सुमन बुकमन, किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क। बात का मतलब ये है कि जब आप इधर इस जगह पे आप आएंगे, अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रहा था, आपका x1 ऑफ n जो था दैट वाज l पॉइंट, आपका x2 ऑफ n था वो भी l पॉइंट था, कन्वोल्यूशन का रिजल्ट क्या होना चाहिए था? 2l, l plus l minus 1, so 2l minus 1 was the expected length of your convolution. So that was the thing कि जिसकी वजह से आप x1 ऑफ k और x2 ऑफ k जब आप l पॉइंट ले रहे थे और जब आप उसको IDFT में लेके जाते हैं तो as a result of that your result was wrong. So अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि expected length actually 2l minus 1 है, so in this case अगर मैं 2l पॉइंट या 2l minus 1 पॉइंट वो करूं तो इस केस में क्या हुआ? 2l पॉइंट आपने लेना था, सो आपके पास x1 ऑफ n क्या हो जाएगा? जीरोस पैड कर रहे हैं आप, 1 1 1 1, सपोज इस तरह की सिचुएशन है, जीरोस आपने पैड कर दिया, सो दैट वाज l minus 1, सो अब ये हो जाएगा 2l minus 1. सो इस केस में दैट वाज योर x1 ऑफ n इक्वल टू x2 ऑफ n. नाउ जब आप इसको सर्कुलरली कन्वॉल्व करेंगे बाय टेकिंग x1 ऑफ k एंड x2 ऑफ k, सो डू इट,
तो this time your result will be this triangular shaped samples जो हैं वो आपको मिलेंगे जब आप x3 of n के लिए जाएंगे, which is the IDFT of this x3 of k. Okay? Yes sir. So do it. ये example आप खुद से करिएगा. So ये कुछ examples मौजूद हैं. So there are three types of convolutions. Linear convolution, which we are quite familiar with. आप signals and systems में, communication systems में, DSP में बार-बार आप ये चीज देख चुके हैं. But two new types of convolutions you have seen in this chapter, which is periodic convolution and circular convolution. Periodic convolution क्या है? That's the convolution of two periodic sequences. और कंडीशन ये है कि दोनों सीक्वेंस पीरियडिक होने चाहिए विद द सेम पीरियड. यानी अगर एक सीक्वेंस का पीरियड 7 है और दूसरे सीक्वेंस का पीरियड 6 है तो द सीक्वेंसेस डोंट क्वालिफाई टू बी गेट कन्वॉल्व्ड. ठीक. सो आपके पास एक का पीरियड 6 है, दूसरे का पीरियड 6 है, देन दे क्वालिफाई टू बी कन्वॉल्व्ड एंड द रिजल्ट विल बी, द रिजल्ट ऑफ दैट कन्वोल्यूशन विल बी ऑफ द सेम पीरियड 6. इसी तरह से सर्कुलर कन्वोल्यूशन जो है दैट इज इन फैक्ट क्लोजली रिलेटेड टू पीरियोडिक कन्वोल्यूशन, बट एक्चुअल रिजल्ट जो है हमें लीनियर कन्वोल्यूशन में चाहिए. सो सर्कुलर कन्वोल्यूशन क्या है? आपके पास दो फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस हैं, आपने उनको इनफैक्ट कन्वॉल्व करना है, बट वी हैव सीन थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएफटी इट इज x1 of k और x2 of k को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज दैट्स द थिंग यू आर आफ्टर, कि आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका IDFT लें तो आपको कन्वोल्यूशन मिल जाए. बट दैट कन्वोल्यूशन जो है वो आपको एक्चुअली सर्कुलर कन्वोल्यूशन फॉर्म में मिलती है. और उस सर्कुलर कन्वोल्यूशन को यानी हाउ टू यूज दैट DFT टू डू लीनियर कन्वोल्यूशन, आप एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द कन्वोल्यूशन जो है वो आप देखते हैं कि क्या होनी चाहिए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू पैड एक्स्ट्रा जीरोस to your sequences x of n, x1 of n, x2 of n. दो sequences अगर आपके पास different length के हैं तो आप suppose, now what I'm saying इसका मतलब ये है, suppose मेरे पास x1 of n है, इसकी जो length है वो 6 है, x2 of n है, इसकी length है वो 7 है. ठीक. मैं 6 और 7 को तो वैसे भी मैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन तो वैसे भी नहीं कर सकता हूँ. So क्या करूंगा मैं? I will be padding 6 plus 7 is 13. 13 minus 1 is 12. So I will be padding 6 zeros, and I will be padding 7 minus 1. Okay, so making it 12, and 7 plus 5 zeros here. So now I will be making both of these sequence of length L. L will be equal to 12 for both of these sequences. I will be taking x1 of k, that would be 12 point, x2 of k, that would be 12 point, point by point multiplication and frequency domain. Take the x1 of k, x2 of k, and then I will be getting x3 of k, which will be 12 point sequence, 12 point मुझे मिल जाएंगे, and then I will be taking IDFT, and that would be my x3 of k, which is x3 of n, which is in fact the result of these x1 of n, x2 of n in the linear convolution का result होगा. So ये जो process है इसमें time domain में करूँ तो that is equivalent to circular convolution, यानी x1 of n 12 point sequence हो, x2 of n 12 point sequence हो with extra zeros padded, और इसकी मैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन करूं तो दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू दिस ऑपरेशन कि मैंने 12 पॉइंट x1 ऑफ के लिया, 12 पॉइंट x2 ऑफ के लिया, मल्टीप्लाई किया और उसका दोबारा IDFT लिया, तो आई विल बी गेटिंग माय x3 ऑफ. एनी क्वेश्चंस? No sir. Okay, I'm leaving it here.